So let's start with the revision of chapter 1, that is number line. Irrational numbers on number line concept we will be discussing. Irrational numbers on number line. Okay, for that thing I discussed two methods. दो methods मैंने बताए थे. The first one is splitting the numbers in complete square numbers. Suppose we are having, see, I am taking an example. Suppose I am having a number that is root 5 and I want to represent it on number line. Okay, root 5 को number line पे represent करना है. So how I will be representing it? I will split it into complete squares. मैं इसको complete squares में क्या करूँगा? Split. Now just write sum of the complete square. 1 का square करने पे हम लोगों को क्या मिलता है? 1. 2 स्क्वायर करने पे 4, ओके, 3 स्क्वायर करने पे 9, 4 स्क्वायर करने पे 16. राइट सम ऑफ देम. नाउ जस्ट सी वन थिंग, इफ आई विल स्प्लिट दिस 5, आई कांट यूज दिस 9. मैं 9 को यूज नहीं कर सकता. वी हैव टू टेक द मैक्सिमम नंबर. हमें जो ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है, वी हैव टू टेक द मैक्सिमम नंबर. सो आई विल बी टेकिंग रूट 5 इन प्लेस ऑफ रूट 5. आई विल बी टेकिंग दिस 4. सो व्हाट आई विल डू, आई विल राइट इट एज 4 plus 1. Okay, so that means what? Now I am having 4. This 4 is the square of which number? This is the square of 2. So I will be writing here 2 square. Okay, then this 1 is the square of which one? 1. So I will be writing it 1 square. Okay, now how I am going to represent? I will take a number line. एक number line draw करेंगे. Okay, so this is the number line I am taking. Okay, I will mark 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, like this. You can take by using your ruler. You can take 0, 1, 2, 3, 1 unit, 2 unit, 3 unit. Now just see, first we will be going 2 units. From 0, we will be going 2 units. So I will mark on 2. I will mark here on 2. Now on this 2 I will draw a perpendicular. यहाँ से एक perpendicular draw करूँगा. कितना करना है? 1 unit only. So I will take 1 unit perpendicular from here. We will measure this one. This is 1 unit perpendicular I am taking. Okay, यहाँ से क्या करना है? एक 1 unit perpendicular draw करना है. This one. See, I have taken 1 unit perpendicular. Okay, so now I will join this one. So what I have done, देखो मैंने क्या किया. First I have taken this one as 2 unit, this one as 1 unit. Okay, so that means 2 square. 2 square is what? 4, and 1 square is what? 5. So that means I am getting this one as root 5. And now what I will do, I will put my compass on this point 0. देखो कंपास को कहाँ पे रखना है? On point 0. I will open this one to this point. This point I am taking as point A. See, I am putting my compass on this point 0. I will open it up to point A and then mark a arc. तब मैं एक arc लगाऊंगा यहाँ पे. And see, I will get a value in between 2 and 3. मुझे एक value मिलेगी 2 और 3 के बीच में. This value will be representing under root 5. ये जो value यहाँ पे आएगी ना, this will be representing under root 5. You can see one thing. देखो अगर हम 2 का स्क्वायर करते हैं, 2 का स्क्वायर क्या आता है? 4. मीन्स अंडर रूट 4 की वैल्यू 2 होती है. एंड इफ वी आर डूइंग द स्क्वायर रूट ऑफ 9, अंडर रूट की 9 की वैल्यू कितनी होती है? 3. सो दैट मीन्स व्हाट? रूट 5 विल बी इन बिटवीन 2 एंड 9. रूट 5 जो आएगा वो 2 और 9 के बीच में आएगा. सो योर आंसर इज करेक्ट. यू कैन आइडेंटिफाई इट. सो दिस इज द वन वे you can represent on number line some irrational number on number line. But see, this method will not work if you are having decimal numbers. Decimal numbers के लिए ये method work नहीं करेगा, because we will not be able to split them like this. हम किसी भी नंबर को इसमें split कर सकते हैं. See, if I am having root 11, अगर root 11 है, so maximum possibility of which greater number I will be having? I will be having 9. So I can write it 9 plus 1 plus 1. See, 9 I have taken, then I will be left with 2 na. 11 minus 9, it will be 2. But 2 I am not having here. यहाँ पे 2 नहीं है. I am having 1, 4, 9. So I will be taking 2 times 1. 1 plus 1. So I will be writing 3 square plus 1 square plus 1 square. Okay, this I will be writing.
Now 3 square, that means now I will be going 3 units from 0 to 3 units. If I want to represent it, see, I will be representing it on another number line. मैं एक बार कर देता हूँ इसको भी. See, this one I am taking 0, 1, 2, 3. Now from this 3, see, first I will be going 3 units. Then on 3 I will draw a 1 unit perpendicular. I will take it. Now how much it is? See, 3 square is 9 and 1 square is, it is root 10. So अभी हमें root 10 मिला है. 1 more unit we have to take. So I will take another perpendicular here. Because see, we have to take the every perpendicular. See, 3, first 3, then 1 unit, then 1 unit. So it will be, now we will be having what? Under root 11. It will be under root 11. Now I will open my compass from this 0 to this point A. Okay, and then I will mark a arc again. फिर से मैं एक arc ऐसे ही लगाऊंगा यहाँ पे, and this value will represent root 11. It will represent root 11. So this is the way you will be representing irrational number on number line without decimal. ये without decimal के लिए ही possible है. But if you are having a number with decimal, then what you will be doing? So let's see this for that one. Now if I am taking an example for the decimal, मैं इसको delete कर देता हूँ पहले. Okay, so let's take a example. Suppose we are having under root 7.6. Now see, हम इसको वो सब नहीं कर सकते, that I have to means distribute it in lower term, means 4 plus 3 like this. So what I will be doing, I will draw a line. एक line draw करूँगा मैं. How much I will be drawing? 7.6 सेंटीमीटर. जितना क्वेश्चन में दिया होगा ना, the same you will be drawing. 7.6 सेंटीमीटर, because it is given in your question that you have to represent under root 7.6. इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना. You have to find the value of under root 7.6. So what we will be doing? We will draw 7.6. I will mark this A, this one as B. Now take 1 centimeter extra. इस B को ना एक्सटेंड कर दो. जस्ट एक्सटेंड दिस फ्रॉम दिस पॉइंट B, यहाँ से एक्सटेंड कर दो एंड टेक 1 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा. ऑलवेज यू हैव टू टेक 1 सेंटीमीटर. हाँ, सो दैट विल बी okay. So this one. So now we are having a new point C. Okay, so now see what we have done till now. We were given with the question that 7.6 we have to represent on number line, or we have to find the value of 7.6. So what I have done, मैंने अभी तक क्या किया है? I have taken a line AB of 7.6 centimeter exactly. Then I have taken 1 centimeter extra. मैंने 1 centimeter, ये जो है ना 1 centimeter extra यहाँ पे लिया है. Now what I will do? I will do the perpendicular bisector of this one. How I will be doing the perpendicular bisector? I will put my compass on point A. कंपस को पॉइंट ए पे रखेंगे. आई विल ओपन मोर देन हाफ. आई विल पुट अ आर्क अबव देन बिलो. सी, आई एम पुटिंग माई कंपस ओवर दिस पॉइंट ए. यहाँ पे कंपस को रखा है एंड देन ओपन इट मोर देन हाफ. हाफ से ज़्यादा ओपन करके एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे. देन पुट कंपस ओवर सी विद द सेम मेजर. कंपस को उतना ही ओपन करना है. पुट इट ऑन सी एंड देन मार्क एन आर्क लाइक दिस. नाउ यू विल बी ज्वाइनिंग दिस आर्क. इस आर्क को ज्वाइन कर दो ऐसे. सी दिस वन. नाउ यू विल बी हैविंग अ पॉइंट. सी दिस पॉइंट ऑन द लाइन. आई विल मेंशन दिस वन एज पॉइंट ओ. यहाँ पे मैंने पॉइंट ओ लिया है. नाउ आई विल पुट माई कंपस ओवर दिस पॉइंट ओ. अब कंपस को कहाँ पे पुट करना है? ओवर दिस पॉइंट ओ. यहाँ पे पॉइंट पे इसको कंपस को रखना है. देन व्हाट यू विल बी डूइंग? इफ योर कंपस इज देयर, then you will be drawing a semi circle. एक सेमी सर्कल तुम लोग ड्रॉ करोगे लाइक दिस. ठीक है, ये सेमी सर्कल तुमने ड्रॉ कर दिया. सी व्हाट यू हैव डन? यू हैव टेकन O एज द सेंटर. सेंटर पे इस O पे कंपस को रखा है तुमने. यहाँ पे O पे कंपस रखा है. यू हैव ओपन इट अप टू पॉइंट A एंड देन ड्रॉ अ सेमी सर्कल. देन फ्रॉम दिस B पॉइंट, सी वी आर हैविंग हियर दिस B पॉइंट इज देयर. Then from this B point draw a perpendicular. एक perpendicular draw करना है directly. See this one. This is a perpendicular I have taken from point B.
ठीक है, बी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है जो कि हमारे सेमी सर्कल को क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा किसी पॉइंट पे. टेक दिस पॉइंट एज डी, उस पॉइंट को डी लेना है. ओके, नाउ व्हाट यू हैव टू डू, जस्ट एक्सटेंड दिस लाइन अ लिटिल बिट. इस वाली लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड और कर दो. ओके, थोड़ा सा एक्सटेंड कर देंगे इसको. नाउ पुट योर कंपास ओवर बी. कंपास को कहाँ पे रखना है अब, बी पॉइंट पे. पुट योर कंपास ओवर दिस पॉइंट बी एंड ओपन इट अप टू पॉइंट डी. बी के ऊपर कंपास रखना है, ओपन कहाँ तक करना है, डी पॉइंट तक. देन मार्क अ आर्क. एक आर्क ऐसे मार्क करना है. नाउ द वैल्यू फ्रॉम दिस पॉइंट बी टू दिस पॉइंट ई. बी से लेके जो ई पॉइंट तक जो भी वैल्यू तुम लोगों को मिलेगी ना, दैट विल बी 7.6. So this is the way to represent a decimal or irrational number having point on number line. Okay, like root 7.6, like root 3.5, any number you can take. Just you will be taking a line, then 1 centimeter extra, perpendicular bisector, then semicircle, then from this B point a perpendicular, you will open your compass from this B point to this D point. You will mark an arc, then B to E, you will be having 7.6. Exactly you will be doing the same thing I have done in the question. Okay, let's see 2.5 question number 1. Okay, 2.5 question number 1, fourth part. You are saying y square plus 3 by 2, y square minus 3 by 2. Okay, this is the simple one. See, if you are given with, suppose you are given with this question, y square plus 3 by 2 and then y square minus 3 by 2. This is the thing you are given with. Now just see, take this y square as a, treat this 3 by 2 as b. So you are having a plus b, then a minus b. This is the thing, and a plus b, a minus b. You are having an identity. The identity is a square minus b square. So that means in place of this a, what we are having, in place of a we are having y square. So I will be taking y square and then we have to do the square, a का square करना है. So in place of a I have taken y square and I am doing square of this one. Okay, then minus b square, what we are having in place of b, 3 by 2. So I will be taking 3 by 2 and then I will do the square. Okay, so it will be y raised to power 4 minus 9 by 4. That will be your answer. So this is the way you can solve. Okay, now see your next doubt. Okay, see, if you are having any two triangles congruent, suppose you are having any two triangles congruent, by any property they can be congruent. If I am having this triangle A, B, C and one another triangle I am taking this one, triangle P, Q, R. Now see, I am saying that this AB side is equal to this PR side, then this angle A, this one is equal to this angle R, and then this AC side is equal to this QR side. This is, suppose this is the question we are having, and now we have to prove them as congruent and we have to write the name in order also. तो देखो, if we are having this triangle ABC and this triangle PQR या PRQ, what name we will be giving, we will think about it. How we will think? See, we will check which angle is equal to the corresponding angle in another triangle. So this is angle A and this is angle R. So if I am writing the name of the first triangle as ABC, first for the first triangle you can name anything. First triangle के लिए तुम कुछ भी नाम रख सकते हो, BAC, ABC, without much thinking. Now for the second one, it should be in correspondence to the first one. जो second triangle का है उसका first के correspondence में आना चाहिए. So if you are taking this A in the starting, in the beginning, so that means what? This angle A is already equal to angle R, na? So that means this R should be there in the beginning of second triangle. Then just see, you are moving from A to B. You are moving from A to B in this triangle. See AB. So that means I am moving like this.
over which side? The side having one mark, that is equal, this AB side is equal to which one? This side is equal to PR. So I will be moving to RP. So this will be RP, and we are left with 1.1 vertex, that is RPQ. So you can name like this. Okay, let's see. एक बार इसको डिलीट कर देता हूँ. The next question you are having is 4x square plus 9y square plus 16z square, let's write it, plus 12xy minus 24y z and minus 16xz. Okay, how will we factorize this one? Factorize करना है ना. Now just simply 4x square, it is the square of 2x whole square, okay, plus 9y square, it is the square of 3y whole square, plus 16z square, it is the square of 4z whole square, plus, now just see one thing, we are having three terms a, b, c. That means what? You will be able to understand that we are using a plus b plus c whole square. ये वाली आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab plus 2bc plus 2ca. Means we are given with this part we are given with, we will be forming this part. Okay, we are given with the expanded identity, expanded दिया हुआ है. Okay, so we will find this part. So now I have taken 2x whole square, 3y whole square, 4z whole square. Now I will be taking 2ab, 2 multiply. What is the value of a? I am having 2x. What is the value of b? I am having 3y. Okay, this one. So you will be taking, you can multiply. देखो check कर सकते हो. 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, and your answer will be 12xy. That means you are doing correct. That means minus 2 multiply. Again yz is there, so that means 3y 4z. So 3y 4z. Now see one thing. You are multiplying 2 3 ja 6, 6 4 ja 24. Then minus 16xz. So it will be 2 multiply. It will be 4z and 2x. 4z and 2x. Now just see 2 4 ja 8, 8 2 ja 16. Now when you will be closing the identity, देखो अभी ये expanded form में है, when you will be closing but you are having minus sign in the identity. देखो यहाँ पे minus sign है, but in this identity you are not having negative. That means what? इन तीनों में से कुछ जो हैं वो negative हैं. So how we will be identifying? We will see a common term that is negative. देखो जो फर्स्ट वाली टर्म है उसमें x और y आ रहा है और यहाँ पे पॉजिटिव है. दैट मीन्स व्हाट? x एंड y बोथ आर पॉजिटिव. तो इसका मतलब z वाली टर्म क्या है? नेगेटिव. बिकॉज सी, बिकॉज ऑफ दिस z वी आर हैविंग दीज टू टर्म्स एज नेगेटिव. सो आई विल बी राइटिंग 2x प्लस 3y माइनस 4z होल स्क्वायर. दिस इज हाउ आई विल बी क्लोजिंग इट. समझ आया? ये माइनस 4z क्यों लिया? क्योंकि वेयर वी आर हैविंग z, दैट मीन्स द टर्म्स इज नेगेटिव. सो दैट मीन्स दिस z टर्म इज व्हाट? दिस इज क्रिएटिंग दिस नेगेटिव साइन. ये नेगेटिव साइन जो आइडेंटिटी में लेके आया है ना, ये z लेके आया है, वरना x और y की वजह से तो सब पॉजिटिव था. सो दैट इज द थिंग यू विल बी थिंकिंग. Okay, 2.5, ninth question, x cube plus, see basically this was a identity we will be using in some questions. हाँ वही है, उसको prove करेंगे हम. These are two identities that we use. The first one is x cube plus y cube equals to x plus y, then within bracket x square minus xy plus y square. This is the first identity we are having. One more we are having, x cube minus y cube equal to x minus y and x square plus xy plus y square. Okay, these are the two identities we are having. So basically in the question we are given that in the ninth question of 2.5 we are given that we have to prove this one equal. So we will not doing anything in the left hand side. इसमें कुछ करने के लिए वैसे भी नहीं है. So we will be taking the right hand side only. Okay,
for anyone you can do this question, ये वाला करो या ये वाला, the same thing, you have to follow the right hand side. So now this x we will multiplying with every term of this one. So x into x square, it will be x cube. Then x into xy, it will be minus x square y. Then x into y square plus xy square. Then I will multiply this y with all the terms. So y into x square, it will be plus y x square. Then y into xy, it will be minus xy square. Then y into y square, it will be plus y cube. So now just see the like term, x square y here, x square y here, one is negative, one is positive, it will cancel out, plus xy square minus xy square, one is positive, one is negative, cancel it out, we are left with x cube plus y cube. So this is what we will be left with. You can see your left hand side is exactly the same. So this is way you can prove. Okay, let's see this one. 7.2 question number 6, what we are given with. Triangle ABC is an isosceles triangle in which AB and AC are equal. So let's draw this one. I'll just delete all these things. Okay, so now I will be taking a triangle ABC, isosceles triangle. Let's take this one triangle. ट्राइंगल यहाँ पे ले लेते हैं. आई विल नेम दिस वन एज ट्राइंगल ए बी सी. दिस इज ट्राइंगल ए बी सी and this AB and AC side are given equal. Then what we are given with in the question is BA is produced to D such that AD and AB are equal. Okay, BA को D तक प्रोड्यूस किया है and then we have to prove that BCD is a right angle triangle, right angle. ठीक है, BA को प्रोड्यूस कर देते हैं. So I will produce this BA. BA को आगे प्रोड्यूस किया, this one like this and we are taking this. ये जो है this one, it is equal to AC. Okay, this is point D we are having. Now I will join this two. इसको ज्वाइन कर देंगे टू पॉइंट सी पॉइंट से एंड वी हैव टू प्रूव दैट एंगल बी सी डी, जो ये एंगल बन रहा है हमारे पास, दिस एंगल, दिस वन वी हैव टू प्रूव एज अ 90 डिग्री एंगल. सो नाउ जस्ट सी दिस वन. दिस इज क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 7.2. ओके, हाँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. देखो, फर्स्ट थिंग व्हाट वी आर गिवन विद, सी ए बी एंड ए सी आर गिवन इक्वल. ए बी is equal to AC, it is given. So that means what, that angle 1, this one I am taking only angle 1 and this one angle 2. Angle 1 and angle 2 will be equal. Angle 1 will be equal to angle 2 because angles opposite to equal side. Angle opposite to equal side. जब हम equal sides के opposite angle लेते हैं तो वो equal आता है, तुम अच्छे से जानते हो. Then this angle 3 and this angle 4 means if I am taking AD equal to AC, it is also given to us that AD and AC are equal. Okay, ये हम लोगों को दिया हुआ है कि AD और AC equal है. So opposite to this AD, this is angle 3 and opposite to this AC, this is angle 4 we are having. Angle 3 and angle 4 are equal. Angle 3 और angle 4 क्या है, equal. Again we will be writing the same region here. यहाँ पे भी वही region लिखना है, angles opposite to equal side. Okay, now just see one thing. If we are having this statement, then angle 4 plus angle 3 plus angle 1 plus angle 2, angle 4 plus angle 3 plus angle 1 plus angle 2, इस पूरे कंप्लीट ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ मैं. आई एम टॉकिंग अबाउट दिस कंप्लीट ट्राइंगल, दिस पिंक वन, पूरे ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ. तो एंगल डी प्लस एंगल सी प्लस एंगल बी, सबका सम कितना आएगा, इट विल बी 180. वो जो पूरा बनेगा 180 आएगा. ओके, यू कैन सी मैंने वही लिया है. यहाँ से मैंने एंगल 4 लिया, यहाँ से मैंने एंगल 3 और 1 का सम करके, क्योंकि मेरे को कंप्लीट एंगल सी चाहिए पूरे ट्राइंगल के लिए, और यहाँ से एंगल 2 लिया. दैट मीन्स now angle 4 and angle 3 are equal. Angle 4 और 3 equal है, so I will be taking 2 times angle 3 plus angle 1 and 2 are equal, so I will be taking 2 times angle 1 equals to 180
then 2 I will take as common, then angle 3 plus angle 1 will be 180 divided by 2, because the 2 I will take as common will come in division, so it will be 90. So that means what? I have proved that angle 3 plus angle 1 is 90. So that means what? Angle BCD, because angle 3 और 1 मिलके कौन सा एंगल बना रहे हैं? एंगल BCD. That means angle BCD is 90 degree. So this is what you have to prove in that question. 4.4 क्वेश्चन नंबर 2 एक बार चेक कर लेते हैं हम. व्हाट इज देयर? गिव द ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन एज एन इक्वेशन इन 1 वेरिएबल एंड 2 वेरिएबल. देखो इसको ना हमें रिप्रेजेंट करना है इन 1 वेरिएबल एंड 2 वेरिएबल. तो देखो अब हमारे पास जो क्वेश्चन है दैट इज, मैं इसको डिलीट करता हूँ एक बार. The question we are having is 2x plus 9 equal to 0. This is the question we are having, and we have to represent it in 1 variable and also we have to represent in 2 variable. अब देखो 1 variable तो है हमारे पास. That means what? If I will be taking 2x equal to minus 9 and then x will be equal to minus 9 upon 2. I can take, means 1 variable I can take easily. That means how I will be drawing the graph, क्योंकि हमें geometrically represent करना है. So I have to take which axis, x axis or y? I will be taking x axis because it is given that we have to represent x1. So I will be taking this one. Now for the first part of the question, just see this one. When it is asking for 1 variable, geometric representation for 1 variable it is asking, so that is what I am doing. I will find the value of x, that is minus 9 by 2. I will take here 0, minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5, minus 6, minus 7, minus 8, minus 9. So I will take minus 1 by 2, minus 2 by 2, minus 3 by 2, minus 4 by 2, minus 5 by 2, minus 6 by 2, minus 7 by 2, 8 by 2 and minus 9 by 2. So what I require, मेरे को represent क्या करना है? minus 9 by 2. So I will just circle this one. Here we are having minus 9 by 2, this one. So this is the first part when we have to represent it in what? 1 variable. जब 1 variable में represent करना था. Now if I will be representing it in 2 variable, the question we are having is we are not having the second variable. Second variable तो नहीं है हमारे पास. We are only having x. So what? How I will make this one as 2 variable equation? I will add on my behalf. I will take 2x plus 0y plus 9 equal to 0. अब एक चीज सोचो, क्या 0y पुट करने से इसमें कोई इफेक्ट होगा? कुछ फर्क पड़ेगा? नो, क्योंकि 0 है यहाँ पे. 0 से y मल्टीप्लाई करके वैसे भी 0 आ जाएगा, लेकिन हमारा काम हो गया है, हमें सेकेंड वेरिएबल मिल गया है. इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ा, बट स्टिल वी हैव गॉट द सेकेंड वेरिएबल. क्योंकि देख लो, अगर मैं यहाँ पे y की वैल्यू में कुछ भी पुट करता हूँ, सी इफ आई एम टेकिंग दिस इक्वेशन एज 2x इक्वल्स टू 9 माइनस 0y, माइनस 9 माइनस 0y, बिकॉज आई एम टेकिंग 9 लेफ्ट राइट साइड, 0y also right side. So 2x minus 9 minus 0y. So x will be minus 9 minus 0y divided by 2. Now if I am putting any value in place of y की जगह मैं कुछ भी वैल्यू यहाँ पे पुट करता हूँ, x will always remain what? minus 9 by 2. x की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा. See, I will show you. देखो मैं कहता हूँ यहाँ पे x लेता हूँ, यहाँ पे y. मैं कहता हूँ y की जगह ना मैं 0 पुट कर देता हूँ. अब 0 इंटू 0 इट विल बी 0. सो माइनस 9 बाई 2. x क्या आएगा? माइनस 9 बाई 2. ओके, देन आई विल बी पुटिंग y1. y की जगह मैं 1 पुट कर रहा हूँ. सो वट x आई विल बी हैविंग, x की जगह मेरे पास फिर से क्या आएगा? माइनस 9 बाई 2. देन आई एम पुटिंग y इक्वल टू 2. सो 2 इंटू 0 अगेन it is 0. So what x I will be having? minus 9 by 2. So that means what? Whatever value you will put for y, you will get x the same result, but you will be representing it in second variable now, because the question is asking for 2 variable. So now what I am taking, I will just draw a graph here. मैं एक ग्राफ यहाँ पे ले लेता हूँ.
suppose this is the graph I am taking. Okay, so now I'll represent some numbers on it like 0 1 2 3 जैसे हम पहले करते हैं 1 2 3 like this, then 1 2 3 4 5 6 7, then -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9. Now see 9/2 को अगर हम डेसिमल में लिखें इट विल बी -4.5 है ना, -4.5. We can take in decimal also. So now just see one thing, the first coordinate we are having is -4.5 and 0. Means if I am putting y, ये y axis है और ये x axis है, if I am putting y equal to 0, what I am getting as x की वैल्यू मेरे पास क्या आ रही है, I am getting -4.5. See this is the value I am getting here, this one -4.5. When I am putting y equal to 1, जब मैंने y की वैल्यू को 1 पुट किया, but I am getting again I am getting -4.5. Then I am putting y equals to 2, again I am getting -4.5. So these are the 3 points I am having. These are the 3 points I am having. You can see value 0 1 2 कुछ भी पुट करने पे. So if I will join all these 3 points, मैं इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करता हूँ. See the graph I am having now. अब मेरे पास एक ग्राफ बन जाएगा. Okay, so this is the line I am having. See, I have represented the same question in one variable, the same question in 2 variable also. So this is what we can do to represent in 1 variable or 2 variable. So let's see this one, 4.3 question number 2. Give the equation of 2 lines passing through 2,14. How many more such lines are there and why? Okay, so I'll just clear this thing. अच्छा, यहाँ पे देखो, we are given with a question that is having a point is given 2,14, and we have to find the equation on our own. So suppose मैं एक point यहाँ पे लेता हूँ. See, this is the point I am taking. I am naming it 2,14. Its coordinate I have written. Now how many lines I can pass through this point? Infinite. कितनी भी line pass करते रहो. Okay, so this is the first line I will be representing, passing through it. I will be passing through it. Second line. Okay, the same way I can represent many lines through it. मैं कितनी भी line represent pass कर सकता हूँ इसके through. Okay, the question is asking how many line you can pass through it. Infinite. But we want to give the equation also, है ना, equation भी लिखनी है हम लोगों को. Now just see one thing. देखो इसके लिए ना बस एक चीज़ पे फोकस करो. This is the value of x you are having. This is the value of y you are having. So if you want to form a equation in which you will put the value of x as 2 and you will get y equals to 14, can you write y equals to 2x, this equation? No, y equal to 7x. Y equal to 7x you can write. Why? Because if you will put x equal to 2, you will get y equal to 14. So this is the first equation you will be getting, y equal to 7x. Then you can also write y equals to x plus 12. In this equation also, if you will put x equal to 2, अगर इसमें भी तुम x की जगह 2 put करोगे, you will get y equal to 14. So this is the way you can form any number of equation on your own. खुद से बना सकते हो तुम.